Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to Goa. I was in Lakshadweep as you guys already know. क्योंकि मैं गोवा होते हुए ही लक्षद्वीप गई थी तो मेरा रिटर्न भी गोवा में ही है and I decided to stay in Goa for 3 days. I hope you guys have watched my Lakshadweep episode. If not, then please watch it. Such a beautiful episode. I had heard a lot about monsoon in Goa. तो इस बार मुझे मौका मिला तो मेरे को लगा कि चलो भाई इस बार मानसून गोवा में ही मनाते हैं. दिस इज़ कालिंगुट एरिया. पहले होटल चलते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन आई विल टेक यू गाइस अराउंड नॉर्थ गोवा, स्पेशली इन कालिंगुट एरिया. प्रियंका चंदोला. Anything you need, any time of day, just chat with us. Put a request for dental kit. It shows here. Anything we need now, we don't have to make the call at the reception. Just with the phone, I can do it. Let's go to the room. Yellow is the color of happiness. Come, let's be happy. So this is gonna be my room for the next 3 nights. कड़क मसाला चाय, ये तो ट्राई करना बनता है. Like the room, it's cozy, it's really nice. I'm so excited about experiencing Goa all over again. This is my first time in North Goa. I am up for some shopping in North Goa, street shopping. So let's indulge in some shopping, some food, beach time. You know these gladiator sandals, this is the vibe of Goa. How much? 850. 850. You have size 39? ये वाला 850. This is the vibe I was waiting for. The vibe of Goa. We will indulge in more shopping, but first let's go to the Kalingut beach, one of the popular beaches in North Goa. वैसे पता है इस साल मेजरली मैं बीचेस पे ही व्लॉग्स बनाए मैंने, बीच वाले डेस्टिनेशन पे, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ इंडिया इन फेब एंड मार्च, देन मार्च एंड अप्रैल इन थाईलैंड. बट ये वाली जो वाइब है ना अपने इंडिया के बीचेस की, गोलगप्पे, भुट्टा, चाट, मसाले, देखो टैटू 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 मैडम. अभी भी इतने लोग हैं यहाँ पे, तो आई डोंट नो सीजन टाइम पे क्या सीन रहता होगा. फर्स्ट लेट्स गो देयर एंड देन वी विल वॉक. You know, after coming back from Lakshadweep, like इतनी isolated, clean beaches के बाद this beach, वैसे गोवा की ये भी जो vibe है ना, ये अपनी एक vibe है. I am not complaining guys, I came for this vibe only. मुझे भीड़ देखना था, मानसून के टाइम देखना था कि लोग कितने होते हैं गोवा में. At this moment, no one can tell where we should go or what's coming. बहुत हेवी वेव्स हैं, बड़े बड़े वेव्स हैं. लुक्स स्कैरी ऑल्सो. आई एम क्रेविंग फॉर सम गुड पानी पूरी सिंस वेरी लॉन्ग. मस्त है. 350. Yeah, I saw it in Thailand also a lot, but this one is new. I like it. फाउंड है सेल वाली दुकान बीच के पास ही. यहाँ पे ना सारे ईयरिंग्स, इट्स इन द रेंज ऑफ 20, 30, 50. ये कॉलेज के टाइम हम बहुत खरीदते थे, तब से लेके आज तक ये सस्ती ही है. दीज आर 100. वाह, बहुत प्यारी आवाज़ है. इट्स रियली नाइस एंड द बेस्ट पार्ट इज जस्ट फॉर 100 रुपीज़. इट डजंट लुक दैट बैड एक्चुअली. ओनली थिंग इज आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग दीज काइंड ऑफ ईयरिंग्स. पर अच्छे हैं, प्यारे हैं. भाई इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. भाई लोग तो 5-5 हज़ार के लबूबू खरीद रहे हैं. आई कैन बाई दिस 100 रुपीज़ वाला ये विल आई. चलो शॉपिंग डन फॉर टुडे. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कल रात से इतनी बारिश हो रही है, फाइनली अब जाके लग रहा है कि मानसून में गोवा आई हूँ. द होटल आई एम स्टेइंग एट, ये स्विमिंग पूल एरिया है एंड दैट्स द रेस्टोरेंट. फर्स्ट वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड थोड़ा इधर
पूल साइड पे चिल करेंगे। This idli is so good. When the rain stops, I'm going to Panjim for some walk. कितना लगाया भैया? 400। 350 से 400 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाएगी। अभी हम जा रहे हैं पारा रोड। दिस इज़ द स्कूटी वी हैव टेकन फॉर 400 रुपीज़ एंड फ्यूल खुद से भरवाना पड़ेगा। गाइस वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड पारा रोड और यहाँ पे पहले नारियल पानी एक पीते हैं, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पे आके ना आई कैन सी दैट नॉर्थ गोवा इन मानसून वाली वाइब, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है एंड फ्रेश ग्रीन। सो गाइस दिस इज़ पारा रोड। डियर जिंदगी से काफ़ी फेमस हो गई है जगह। मैं यहाँ पे पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ। बॉलीवुड का इफ़ेक्ट क्या है हमारे ज़िंदगी में। ये रास्ता ना पूरा का पूरा बिल्कुल खाली था जब मैं 2019 में आई थी यहाँ पे, और अभी पारा रोड दैट डियर ज़िंदगी लेन दे कॉल इट, इट इज़ सो क्राउडेड। कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई ट्राईपॉड लगा के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहा है। वहाँ स्कूटी पार्क नहीं कर सकते। मॉनसून इन गोवा, सो मच ग्रीनरी। आँखें जहाँ जहाँ तक जाए आपको सिर्फ हरियाली नज़र आ रही है। It's a nice crockery store. कितने की है ये? Each. Nice. I wish I could take it home. 100 rupees. Maybe I can take this. Okay, so अभी पारा रोड से we were going to Saligaon. Actually, we are already in Saligaon now. So on the way, I saw Monjani's bakery. So I told Niharika that we should try Monjani's, and she was like, "What is so special about it?" मैं बताती हूँ। When I was studying in Bangalore, no, उस टाइम पे सबसे सस्ती बेकरी होती थी। तो हम सबके बर्थडे का केक Monjani's से हम लाते थे। And I'm talking about 2004-5. So like 20 साल पुरानी मेमोरी है मेरी कुछ Monjani's की। Anyway, ordered this egg puff. Let's try this. ये जो टेस्ट है ना बिल्कुल कॉलेज टाइम पे ले गया। Monjani's approved. So Saligaon is a serene village, very close to Kalingut. Like close in the sense 6 kilometer. It is a very serene, calm and laid back kind of village. वैसे तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा गोवा ही काफ़ी laid back है। बिल्कुल गांव जैसा माहौल है, modern traditional गांव जैसा माहौल। Nice. I'm already so very excited to show you what I'm gonna do in the next 3 hours. आज मैं नॉर्थ गोवा कालिंगुट से पंजिम पहुंच गई हूँ। बचपन से ना मुझे बड़ा क्रेज़ था इस नाम का, पंजिम। So today I'm gonna take you guys around Panjim and I'm taking a guided tour. We will do some vegetarian food tour. Goan food को हम काफ़ी करीब से जानेंगे and we are going to explore all these colorful lanes. Kunan is going to be our guide today and we're going to explore a lot of vegetarian food. Goa University is the only university in India where you can do higher studies in Portuguese. This thing I read that Goa, although it does not have a regional language, people speak Konkani, then they speak Portuguese language. Yeah, we've got a lot of people who also speak Marathi over here. Wow. Teach me something in Portuguese. Alguma coisas. You know what that means? No. Something. Something. Fontainhas is a beautiful place and I'll tell you why, okay?
The Portuguese language is so interesting. So in Portuguese, you add inha for feminine and inhu for masculine. Okay. Now, fontaine was the word fountain because it started off with a beautiful fountain further up. Then we added an inha at the end, so Fontainha. Fontainha. And then an S because it's a beautiful neighborhood, Fontainhas. Fontainha. Most of the houses here have Portuguese influence, and it's the capital of Goa. Portuguese have ruled Goa for 470 years or something. So there's so much history going on here, and this is the kind of Goa I wanted to see. Under the Portuguese regime, there was this law stating that you could only paint your house one of 4 colors: red, green, blue, yellow. So I think one of the reasons that this is known as the colorful lane is purely that cultural choice they're making. ये भी गोवा का एक part है जो आप experience कर सकते हो. I've never come to Panjim before, you know. It's so beautiful. Guys, remember this? Washing powder Nirma. Washing powder Nirma. Ponje was the original name over here. Ponje meant city that will never flood. Portuguese were struggling to say that, so it became Panjim. During the Portuguese regime, it was spelled P-A-N-G-I-M. Okay. Now we are back under the Indian regime. At this point, it is Panaji. P-A-N-A-J-I. Oh. Yeah. So all 3 names are actually legally recognized. Anywhere in India or anywhere in the world, if you want to send a letter here, you can choose any of those names. Panaji, Panjim, Panjim. Panjim. Yes. Here goes our first ring, kokum. Okay, this is another dish we have here. It's called rizoish. Perfect? Rizoish. In Goa, a lot of the Portuguese dishes are made with Indian spices, made of maida. The covering has semolina, right? Suji. And that is the Indian twist to it. So crisp and so good. This has got corn, cheese and spinach. It's really good. This is a heritage home kind of place, and what a vibe, man. Let's get in. So next we have pav with shakuti. This is mushroom shakuti. गोवा और पाव का रिश्ता कितना पुराना है, colonial time से बहुत पुराना है. So everyone knows pao is something that was brought into India by the Portuguese. Now in Goa, we have 7 types of bread. This is considered the gravy bread in Goa. This is unde, U-N-D-D-E, if you had to Romanize it. In Goa, in Portuguese language, you don't say pau, it's called pau, pau, pau. Perfect. That sounds like cat pau. When I used to have non-veg, I was always like, कहाँ जाके मैं मच्छी खा सकूँ? Look at this, guys. हालात बदल गए, वक्त बदल गया, मैं बदल गई हूँ. गोवा में आके अच्छा खासा मैं वेजिटेरियन खाना खा रही हूँ. I love mushroom, any kind of mushroom. Super, very tasty. कहाँ try करना है ना? That's a secret. Because I want you guys to join this food tour. Experience in itself. खुद से करोगे मज़ा नहीं आएगा. So अभी walk करते करते मैं एक लेन में पहुंची हूँ पंजिम में ही, and this is the Times of India का office. Guys, what is this? This one is a busy place. This is called Alsande. This is sukhi and this is bread. It's a little sweet bread. I did not like Alsande because beans मुझे पसंद नहीं है. But I'm a lover of aloo. So this sukhi is so good with this banana bread. So you know this place has also been reviewed by Sachin Tendulkar. Review in the sense that वो कभी यहाँ आए थे. Next time से when you come to Goa and you're a vegetarian, लोग आपको कितना भी बोले ना, as a vegetarian गोवा में जाकर क्या करोगे? खुद भी ये वीडियो देखना
और उनको भी ये वाली वीडियो दिखाना, ठीक है? After lots and lots of food, it's time for dessert. So we have come to a place. This is running since 1922. More than 100 years old. Traditional bebinka. This is very famous thing of Goa. Bebinka. This is made of guava. This is something like puran poli. It's yummy. I love guava. खाना खा लिया, dessert खा लिया. Now we are going to a bar. Cheers. Feni, mango feni. Alright guys, cheers, and with this I'm gonna end this day here itself. You know, I cannot recommend you guys enough about this tour. So I did it with a company, it's called Soul Traveling. Okay guys, came to my hotel. Let's check if we can have some dinner. There is a dedicated bar space. I'm sure all of you know that Goa is very famous for its cashew nut, but here is a fun fact. Cashew nut originally did not grow in Goa, so Portuguese had brought cashew nut to Goa from Brazil. और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती हुई काजू की और बहुत ज़्यादा काजू उपजने लगे. Let's do some काजू शॉपिंग. ये तो यूजुअल काजू ड्रम रोस्टेड, देन ये छिलके वाला काजू 400 रुपीज़ हाफ के जी आता है. 400 का हाफ के जी. ओके. ये 450 का है. ओके. ये 480 है. 400, 450, 480. डिफरेंस क्या तीनों में? 40 ग्रेड है, 320 ग्रेड है, वो ब्रीड है. ग्रेड क्या होती है काजू? ग्रेड होता है मैम, काजू साइज के ऊपर डिपेंड है. ओके. वो ग्रेड होता है. ग्रेड जितना छोटा काजू का साइज उतना. 320 ग्रेड. सीधे साइज. ये छोटे वाले काजू हैं. ओह, मुझे लगा मटर छिलने जैसा होगा. नहीं है. साइड में से ऐसे इजीली. भाई ये काजू खा के लग रहा है अब तक हम कचरा काजू खा रहे थे. So in my attempt to show you all a little different Goa, today I have come to Ribandar and I'm going for another tour today. I'm going to this island called Divar Island. काफ़ी interesting history है इस island की. So we are going to take one of the ferries अभी. उसमें स्कूटी डालेंगे. Bob, you wanna say hi? Hello. Okay, the ferry is coming. ओके, सो हमने स्कूटी चढ़ा दी है फेरी पे. यहाँ से जिस आइलैंड पे हम जा रहे हैं, दीवार आइलैंड, इट्स 5 minutes राइड इन टोटल. एंड देन वी हैव द वॉकिंग टूर. लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली वॉकिंग, बट स्कूटी से हम आइलैंड टूर करेंगे फॉर 3-4 hours. लेट्स सी हाउ दिस गोस. अब तक मैंने समंदर वाला गोवा देखा, समंदर वाला गोवा दिखाया आप लोगों को. आज हम रिवर वाला गोवा देखेंगे. Trust me guys, vibe है. 5 minutes later we are here. यहाँ पे आते ही ना सारी चीज़ें ही अलग सी लगने लगे. It's so quiet. Welcome to दीवार. मज़ा ही आ गया यार, कितनी सुंदर जगह है ये. From here our tour starts. Another 3 to 4 hours of indulging in history. Lot of ruins, lot of stories. Diwar Island is the only large island in Goa which is not connected by road. Does Divar mean wall? So technically it's missing a I at the end. That's what the Portuguese had rechristened this island as. They called it as Diwari. Our Goans have this habit of cutting out vowels at the end, you know. So Diwari became into Divar. We say Diwari, Dev, Vadi. Now does it make sense? Yes. लग रहा है गोवा से बिल्कुल बाहर आ गई हूँ. I had never seen this side of Goa, this kind of Goa.
So this one is one of the oldest churches we have in Goa, and this is on Diwar Island. There are churches and then there are chapels. So, welcome to the ancient site of Saptakoteshwar, and what is behind me was the Tirth of the temple. Saptakoteshwar was the family deity of the Kadamba dynasty. The Kadambas ruled us from the year 1010 to approximately 1310. Okay, so you see these window kind of structure, it's called niche. So पुराने टाइम पे ना उनमें एक एक niche में दिया रखा करते थे और उससे ही पानी का टेम्परेचर थोड़ा lukewarm हुआ करता था, and that's how people used to take bath here. सप्तकोटेश्वर, okay, सप्त means 7, कोटि 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि 1 करोड़, या सप्तकोटेश्वर. ईश्वर is महादेव. So 7 ऋषि मुनि 1 करोड़ times उन्होंने महादेव का chant किया, and Mahadev appeared here, but since he could not stay, he manifested himself in a lingam. So वो लिंगम ही यहाँ पे रखा गया था और यहाँ पे ये मंदिर था. लेकिन पोर्चुगीज़ जब आए गोवा में रूल करने के लिए अराउंड in 16th century, so Hindus they moved this lingam and put it in the main Goa. तो अभी मेन गोवा में इसका टेम्पल है. Who knew a place like this exists in Goa? Now we are going for a mangrove safari in that kind of boat. See this guys, sunset time, river mein safari. So right now we are sailing in the river Mandovi. Okay, so now we have come to the last part of this tour, the trail, and we are here to try some feni. Well, I called it jamun flavor. It's jeera. I mean, come on guys, दिमाग में आया ही नहीं कि जीरा अल्कोहल में डाल सकता. Yeah, this I know. कार्डमम, इलायची, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया. 7 आंसर्स बता दिए, करेक्ट नहीं है. फिनाइल तो नहीं पिला रहे हो हमको? Bob, it was such an amazing experience. Thank you so much. Anyway guys, with that our tour is over. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. So the company name is Soul Traveling. आप अगर आप गोवा आते हो तो they have a lot of walks and guided tours, and also you can take that. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. Yeah, it's the last night in Goa. Tomorrow morning we are leaving and going to Coorg. So I want to enjoy this night. Let's see what we do. So guys, I'm leaving from Goa and going to Coorg today. Back then in 2019 when I came to Goa, I came here as like a tourist and I did all the touristy stuff. There's nothing wrong in touristy stuff, but the thing is my season ke time aayi thi, and you know, I saw so much crowd and there was nothing about Goa that clicked in me, you know. तो मुझे लगा कि यार गोवा इतनी कोई happening जगह नहीं है. This time when I came to Goa, the narrative of Goa changed for me. I stayed in North Goa. As you can see, I'm staying at this beautiful hotel, Bloom Hotels in Kalingut. It's right in the center of Kalingut. बहुत सारी चीज़ें जो restaurants हैं, hotels, cafes,
shopping places, beach, it's all nearby. आज मैं Coorg जा रही हूँ and I'm going for a very special thing there. I have to show you guys something very unique in Coorg. That's all from Goa. I'll see you guys in the next episode. Like, comment, share and subscribe. Until then, bye-bye. Inside the ocean, we knew what we